My name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. This is a Nifty 50 analysis. Okay. Let's see how the levels can work. Let me just make the levels in front of you. I told you कि इसका लो, कैंडल का लो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा और स्टार्टिंग में इसी कैंडल का हाई आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, right? These are the first two levels. Let's see how we can find an opportunity to trade in it. मुझे दिख रहा है कि ये एक चैनल में है, डेली में, एंड सपोर्ट पे है चैनल के एकदम अभी, राइट? आई होप आई एम क्लियर विद दिस. ये एक तरह से बेयरिश चैनल भी लग रहा है मुझे थोड़ा सा. यस, इसके नीचे नहीं दिया तो निफ्टी भी बेयरिश है. आई होप यू विल वॉच द बैंक निफ्टी वीडियो एज वेल. Watch both the videos. दोनों videos में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा about the analysis, not how we do it. Right? Let's go in smaller time frame and see why did the market go up. Market was going up from here. This was an inverted head and shoulder pattern, which I told you it will give you a target. Your target was supposed to be around 17,500. इसने 17,600 तक के टारगेट आपको दिए हैं. उसके बाद फ्राइडे मैंने ट्रेड नहीं किया था, ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी. लेट्स सी मंडे को मगर मार्केट कहाँ खुलती है. मार्केट में गैप डाउन इज नॉट एन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हुई है मुझे कि ये इस गैप डाउन के नीचे आके वापस ऊपर गया एंड ये ऊपर तोड़ नहीं पाया इसको, एंड मार्केट वापस एक तरह से नीचे आ गई और बंद हो गया, राइट? सो दिस इज द चैनल दैट इट इज एक्चुअली इन. ओके, 1 hour time frame. It is at a very crucial support. So अगर ये टूटता है, if you see this breaking in 15-minute time frame, right, I would suggest you to go for a sell entry. This level is 17,340. If this breaks, you can go for a sell entry. There is a support at 17,300, but I think you can achieve at least 17,200 targets. 17,200 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट ये गैप डाउन था, गैप अप था, उसके बाद से यहाँ से ये पूरा एक फिल होगा गैप. ओके, 17,240 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं ऑन मंडे. एंड इफ इट ओपन्स अबव दिस लेवल 461, वेट फॉर इट, लेट इट सस्टेन इन 15-minute कैंडल, 5 to 15-minute कैंडल. पूरी कैंडल क्लोजिंग होने देना, इसी के ऊपर सपोर्ट लेके जा रहा है, देन वी कैन इनिशिएट अ कॉल एंट्री ओवर हियर एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट एटलीस्ट टिल दिस लेवल अगेन. ये जो गैप फिल करने जाएगा दैट इज 17,583. यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री बहुत प्रिकॉशनरी लेनी है, और अगर हम 10 लाख से ट्रेड करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको सीधा लाख रुपए से ट्रेड करें. एंड अगर आपको पुट की एंट्री लेनी है, देन लेट इट ब्रेक दिस, take a support over here, let it retest, and then we can take the entry. I've already told you closing इसके नीचे होगी, retest होगा, and then हम एक एंट्री लेंगे. मान लो गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो मान लो गैप डाउन खुलती है 17,200 के आसपास मार्केट खुलती है, तो हम एक रीटेस्ट का या पुल बैक का यहाँ तक 17,306 तक का या 300 तक का वेट करेंगे, and then we can expect a bigger target as well in this. Okay, I hope I'm very clear. मार्केट को एक बेरिश में ही मुझे लग रही है. It is not a bullish thing at all right now. I was bullish. अगर ये मार्केट ने फ्राइडे को मूव अपसाइड दिया होता, it would have broken this range. I would have been bullish on Nifty and Bank Nifty. But मार्केट गैप डाउन खुल के सस्टेन ही नहीं कर पाई इसके ऊपर. So I'm bearish on it right now. Do like, comment and share. Please tell me अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो.